Today we are on the topic as to when injunction should not be granted. कब इंजंक्शन ग्रांट नहीं करना चाहिए. हम लोग ने अभी पिछले वीडियो में देखा as to how and when you are entitled for injunctions. Now we are talking about our circumstances as to when injunction should not be granted. तो कभी अगर कोई ऐसे मैटर्स आते हैं, ऐसे केसेस आते हैं, ऐसे सर्कमस्टांसेस आते हैं, कोई केस फाइल आता है, and if this 10 circumstances which I am discussing, if any of the 10 circumstances exist, तो injunctions नहीं मिलेगा. You have to oppose it. Now what are those 10 circumstances under which injunction should not be granted? First, there cannot be an injunction so as to restrain a person from prosecuting judicial proceeding. अगर मुझे किसी के खिलाफ केस फाइल करना है तो कोई मेरे खिलाफ ऐसा इंजंक्शन ले नहीं सकता. Let us say, for example, I gave a check. The check got bounced. I issue a check, the check got bounced. Now when the check is getting bounced, obviously I know that the other person is going to file a case against me. So I file a suit. I file a suit against that person saying stop that person from filing a case against me with respect to that bouncing of the check. Now such injunctions cannot be granted because the principle goes where there is a right, there is a remedy. The check, for the purpose of check bouncing, if he is having a right, he will get that remedy. So there cannot be an injunction so as to restrain the person from prosecuting judicial proceeding unless and until the nature of the case is such where if injunction is not granted, it would lead to multiplicity of proceedings. अब कैसे होता है, कभी कभी एक ही सर्कमस्टांसेस के बेसिस पे कई केस फाइल हुआ है. मैंने यहाँ पे केस फाइल किया, जिसके ऊपर मैंने यहाँ केस फाइल किया, उसके ऊपर उसने वहाँ केस फाइल किया. तो क्या होता है, मल्टीपल एक ही सब्जेक्ट मैटर को लेके मल्टीपल प्लेसेस पे मल्टीपल केसेस चल रहे हैं. सो इन दोस सर्कमस्टांसेस इंजंक्शन कैन बी ग्रांटेड. अदरवाइज नॉर्मली injunction cannot be granted so as to initiate any sort of judicial proceeding. Now coming to the second part, there are times when people file case. कई लोग आप बोलोगे when if you are an advocate or if you are discussing with a legal consultant, there will be many times you will find a client बोलते सर हमको सीधा हाई कोर्ट से ऑर्डर चाहिए. Now you know under the court of law, under the law of the land, every court has its own jurisdiction. And that place where the jurisdiction lies is the place where the suit is required to be filed, case is required to be filed. Now there cannot be an injunction so as to restrain a person from approaching a subordinate court. Subordinate is the line, subordinate court. If on the basis of cause of action, it is the civil court, lower civil court who is going to have the jurisdiction, तो वो civil court के पास जाएगा. जूनियर डिवीजन जज के पास वो जुडिक्शन बनता है तो जूनियर डिवीजन जज के पास जाएगा. सीनियर डिवीजन बनता है तो सीनियर डिवीजन जज के पास जाएगा. डिस्ट्रिक्ट जज के पास होता है डिस्ट्रिक्ट जज के पास जाएगा. ऐसा कोई इंजंक्शन नहीं ग्रांट हो सकता कि हाँ उसको जूनियर डिवीजन जज के पास मत जाने दो, उसको सीधा हाई कोर्ट जाने दो, ये इसका जुडिक्शन का वो एंटरटेन ना करे, यहाँ पे वो फाइल नहीं करे, वो सीधा हाई जुडिक्शन पे फाइल करे. ऐसा नहीं हो सकता. So there cannot be an injunction so as to restrain a person from the court of subordinate jurisdiction. Third, there cannot be an injunction so as to restrain a person from approaching a legislative body. Legislative body. Now what happens under various laws, under the constitution, under the various other laws, there is a body. A body has been created. For example, collector, again he is a body. Commissioner, municipal commissioner, he is a body. Police commissioner is a body. There are number of proceedings which go before the police commissioner. तड़ी पार के जो होते हैं वो पुलिस कमिश्नर के पास जाता है, कलेक्टर के पास जाता है. कई मैटर्स वो लैंड को डिस्प्यूट क्रिएटेड, रेवेन्यू रिकॉर्ड से रिलेटेड रेवेन्यू ऑफिस के पास जाता है. तो ऐसे अलग अलग बॉडी होते हैं. वो लेजिस्लेटिव बॉडी है, इलेक्शन को है तो इलेक्शन कमिश्नर के पास जाएगा. तो ऐसे वो बॉडीज होते हैं, अलग अलग बॉडीज होते हैं. सो प्लेस वेयर अ पर्टिकुलर बॉडी इज हैविंग अ पर्टिकुलर राइट टू एंटरटेन द मैटर. सो देयर कैन नॉट बी एन इंजंक्शन स्टॉप हिम फ्रॉम अप्रोचिंग म्युनिसिपल कमिश्नर, स्टॉप हिम फ्रॉम अप्रोचिंग द कलेक्टर, स्टॉप हिम फ्रॉम अप्रोचिंग सो एंड सो पर्सन. ऐसा नहीं हो सकता. तो ऐसे केसेस अगर आते हैं, ऐसे रिलीफ अगर मांगी जाती है तो ऐसे केसेस के लिए इंजंक्शन ग्रांट नहीं हो सकता. So that was the third criteria which we have discussed. The fourth, there cannot be an injunction so as to restrain a person from initiating criminal proceedings. कभी कभी क्या होता है, there are number of times when you see एक एग्रीमेंट होती है और एग्रीमेंट के अंदर पर्पसली क्लॉज लिखा हुआ होता है. नॉर्मली इसे क्लॉज लिखा होता है
any dispute arising from respect to this transaction, their remedy will lie only before the civil court and nobody will take any criminal action against anybody. फॉर अ लेमैन, जब आम आदमी वो पढ़ता ना तो उसको लगता है अरे मैंने तो अपना सब हाथ पर काट के दे दिया, मैंने तो खुद साइन करके रखा है कि मैं फ्रॉड का केस, क्रिमिनल केस में नहीं फाइल करूंगा, कैसे फाइल करूं? और अगर सामने वाला जाता है, वो बंदा जाता है केस फाइल करना, क्रिमिनल केस फाइल करना, तो मैं कोर्ट में जाता हूं, सी दिस इज एन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट के अंदर क्लॉज लिखा हुआ है, साइन किया हुआ है कि नो बडी विल इनिशिएट क्रिमिनल एक्शन अगेंस्ट ईच अदर, पर ये बंदा मेरे खिलाफ क्रिमिनल केस फाइल कर रहा है, इसको इंजंक्शन दो, रिस्ट्रेन हिम। नहीं हो सकता, ऐसे इंजंक्शन नहीं दिए जा सकता, बिकॉज दे आर टू सेपरेट रेमेडीज। Out of the same agreement, if the person can make out that there was a cheating, there was a fraud, then he can file a case against me with respect to starting of initiation of criminal proceeding. That is his right. So injunction cannot be granted for that purpose. Nextly, we can say injunction cannot be granted in case of a performance of an act which could not be performed. Now ये कैसा है? कभी कभी क्या होता है, कुछ एक्ट्स, कुछ परफॉर्मेंस, कुछ अग्रीमेंट्स ऐसे होते हैं या कुछ कंडीशंस ऐसे होते हैं जो परफॉर्म करना मुश्किल है, इम्पॉसिबल है। और लेट अस से देयर वाज अ लैंड, बिकॉज ऑफ सुनामी द लैंड गॉट एक्सटिंग्विश्ड, द लैंड गॉट सबमर्ज्ड। नाउ व्हाट, इट कैन नॉट बी परफॉर्म। नाउ इंजंक्शन टू बी ग्रांटेड इन दैट प्रॉपर और विद रिस्पेक्ट टू दैट प्रॉपर्टी व्हिच डज नॉट एग्जिस्ट, व्हिच कैन नॉट बी परफॉर्म। तो जो चीज परफॉर्म हो ही नहीं सकती है, ऐसे भी केसेस में इंजंक्शन ग्रांट नहीं हो सकता। द नेक्स्ट विच कैन डिस्कस इज अ पार्ट इज इंजंक्शन कैन नॉट बी ग्रांटेड विथ रिस्पेक्ट टू प्रिवेंटिंग एन एक्ट ऑफ न्यूसेंस विच वुड नॉट फॉल विद इन द कैटेगरी ऑफ न्यूसेंस। ऑलरेडी एक थोड़ा जम्बल्ड वर्ड्स है, पर समझाना चाहता हूँ, बहुत एग्जाम्पल से बहुत क्लियर हो जाएगा। Let us say I saw big ad in a newspaper, एक टाउनशिप प्रोजेक्ट, और टाउनशिप प्रोजेक्ट में देखता हूँ कि ये पर्टिकुलर फ्लैट और फ्लैट के सामने लश ग्रीन गार्डन। अब ये देखने का बाद लगता है वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल आइडिया, मेरा फ्लैट है एकदम गार्डन के सामने, क्या मस्त होगा, मैं फ्लैट कर दूँ, सुबह सुबह खिड़की खुलूँ, सो मच सनरेज एंड दैट गार्डन एंड सो ब्यूटीफुल। नाउ व्हाट इज गार्डन मेंट फॉर? रिक्रिएशन पर्पस। गार्डन है, बच्चे आएंगे, सब होगा। अब वही गार्डन कुछ समय के बाद जब टाउनशिप पूरी भर जाती है तो वही गार्डन में सुबह इसके पहले कि मेरे नींद खुले बच्चे खेलने लगते हैं, लोग घूमने लगते हैं, लोग आवाज करने लगते हैं। अब वही चीज मेरे लिए न्यूसेंस हो गई है। नाउ कैन आई गो टू द कोर्ट एंड से स्टॉप फ्रॉम यूजिंग दैट प्रीमाइसेस? मेरे लिए न्यूसेंस, सी नॉर्मली व्हाट हैपन इन केस ऑफ न्यूसेंस, यू हैव अ राइट। अगर बगल वाला मेरा लाउड स्पीकर बजा रहा है इतने हाई वॉल्यूम पे कि मुझे डिस्टर्ब हो रहा है, आई हैव अ राइट टू स्टॉप इट। तुम्हारे दरवाजे के सामने कोई कचरा फेंक रहा है, यू हैव अ राइट टू स्टॉप इट, यू हैव अ राइट टू सीक इंजंक्शन। तुम्हारे दरवाजे के सामने कोई नाला खोल रहा है, यू हैव अ राइट टू सीक इंजंक्शन। बट इन दिस केस इवन दो देयर इज एन एक्ट ऑफ न्यूसेंस, मुझे बच्चों से तकलीफ है, खेलते हैं, आवाज करते हैं, आते हैं दरवाजे टक टक पानी दो ना, मुझे तकलीफ है, लेकिन फिर भी मैं इंजंक्शन नहीं मांग सकता। क्यों? वो गार्डन जो है वो रिक्रिएशन पर्पस के लिए है। सो देयरफॉर you cannot, injunction cannot be granted in a case where there is a nuisance है, but then it cannot be bought within the clear category of nuisance. Okay, next, injunction cannot be granted where there is a continuing breach and you have acquiesced of your right. Acquiesced means you have allowed to do the wrong to yourself. You have allowed to continue the breach. तुमने परमिट किया, हो रहा है, गलत होने दो, तुमने ही होने दिया। अब एग्जांपल देता हूं, लेट अस से आई एम अ ओनर ऑफ अ प्लॉट ऑफ लैंड, अ प्लॉट ऑफ लैंड विच फॉल अंडर नो एनडी जोन, नो डेवलपमेंट जोन। उसको कुछ हो ही नहीं सकता, मैं डेवलप नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। थोड़ी दूर पे मैं रहता हूँ, रोज आता जाता हूँ, आते जाते हुए मैं देखता हूँ कि वो मेरा लैंड है। एक दिन देखता हूँ कि उस पर एक बंदा आके बस गया, तंबू गाड़ के करके बस गया, रहने लगा। आई डिड नॉट टेक एनी एक्शन अगेंस्ट दैट पर्सन। कुछ समय गुजरते गुजरते 10 तंबू बन गए, 20 घर बन गए। ऑल ऑफ अ सडन वन फाइन डे गवर्नमेंट डिक्लेयर्स कि इसके बगल में मेट्रो शेड बनने वाला है, या इस प्लॉट के बगल में एक एयरपोर्ट बनने वाला है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने वाला है।
Now you understand, the plot which does not have any value, all of a sudden the value increases multiple times. 10 लाख रुपए की चीज आज 1 करोड़ के बराबर हो गई. अब वो लोग हैं जो पिछले 2 साल 3 साल से वहां रह रहे, 20 लोग रह रहे हैं. Now I file a suit before the court. बोलता हूँ, they see this is my property. See they don't have any right to go into it. See they are encroachers. Stop them from entering into the land altogether with immediate effect. Restrain them from entering upon that land because it is my land. अरे नहीं मिलेगा इंजंक्शन. जब इतने समय तक 2 साल तक जब रह रहे थे, तुम्हारे आँख के सामने झोपड़े बांध रहे थे, तुम्हारे आँख के सामने वहां रहने लगे, तब तो कुछ बोला नहीं. अब आके बोलते हो उनको रोको उस प्लॉट में जाने से, रिस्ट्रेन देम. नहीं होगा. Injunction cannot be granted because I myself have consented to the wrong. Whatever wrong happened, it happened because I followed it. I did not take objection. I did not take that action. And so therefore, in such cases, injunction cannot be granted where you yourself have consented to the wrong, where you yourself have allowed to continue that breach. It cannot happen. Next. Injunction cannot be granted when equal efficacious remedy is available to a person and that person could have adopted that usual mode of proceeding. अब equal efficacious remedy मतलब क्या होता है, हर एक्ट के अंदर एक ना एक रेमेडी दी हुई होती है और वो रेमेडी जो दी हुई होती है वो रेमेडी अडॉप्ट करना चाहिए. अगर वो नॉर्मल कोर्स ऑफ रेमेडी है तो वो अगर नॉर्मल कोर्स ऑफ रेमेडी अगर वो बंदा अडॉप्ट नहीं करता तो ऐसे केसेस में रिलीफ नहीं देनी चाहिए. आई गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल. हम लोगों ने सेक्शन 34 किया था, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट था. उसके सेकेंड पार्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन में मैंने बोला था व्हेन फ्रॉम वन पर्टिकुलर कॉज ऑफ एक्शन मल्टीपल रिलीफ इज अवेलेबल टू अ पर्सन and the person purposely omits to choose such relief, then mere suit for declaration is not maintainable. मैंने बोला था, अगर याद था, if you go back to that link you can once again go see it. Let us see an example. I enter into an agreement for a purchase of a flat. I pay 10% value in earnest money, then 30%, then 30%. The 70% मैं pay कर चुका. 30% was supposed to be paid when the person was supposed to give me the possession of the property. I issue a notice to him. In lieu of that, he replies that the agreement is forged, not valid. Agreement was altogether bogus. The loan जो था, वो पैसा जो था, वो तो friendly loan था. Now I file a suit before the court of law seeking a declaration, declared that the agreement entered into Mr. A and B is valid, subsisting, and enforceable. Will that suffice the purpose? और उसके साथ एक इंजंक्शन होता है, restrain that person from selling of that flat because if he sells the flat to somebody, then I may not get relief. Purpose solve होता है, इंजंक्शन मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए. Why नहीं मिलना चाहिए? Remember section 34. Along with the period of declaration, he has to seek relief of injunction. He has to seek relief of possession also. That possession also was an equal efficacious remedy. He merely filed a suit for injunction and so therefore it is not maintainable. So he has that alternate remedy. He has that equal efficacious remedy which he choose not to take. And therefore, if a person has equal efficacious remedy, appropriate remedy, proper remedy available under the law, and if a person purposely choose not to do so, then injunction should not be granted. Next, this is the 9th point which we can say, that is category I. It says injunction cannot be granted in cases when the conduct of the plaintiff or his agent has been such so as to disentitle him. मतलब मेरा ही कंडक्ट खराब, मेरा ही गलती है, मैंने ही कुछ पार्ट है जो नहीं किया. फॉर एग्जाम्पल लेट अस से जो फ्लैट का एग्जाम्पल है, जो 30 the example where I have to give 30% balance money and he has to give the possession of the flat. अब उल्टा रिवर्स ले लो, जो फ्लैट का सेलर है वो बोल रहा है भाई तू 30% जो बाकी है 30% ले दे और पोजीशन ले, पर मेरे पास पैसे नहीं है. बंदा 30 दिन रुकता है, 60 दिन रुकता है, इसके बाद बोलता है अगर तू पैसा नहीं दिया तो मैं किसी और को बेच दूंगा. Now if he sells it to somebody, what happens? That remaining 70% which I have paid him, I will be suffering
at the same time I'll be not getting that flat which is at appropriate location, वो नहीं मिलेगा. तो क्या करता हूँ मैं कोर्ट में जाता हूँ. I go before the court of law saying that restrain him from selling that flat. Court says ठीक है, I'll restrain him, deposit 30% amount. अब क्या, I tell you ठीक है मैडम एक हफ्ता दे दो. हफ्ता गया, 10 दिन गया, 30 दिन गया, 30 दिन के बाद भी मैं वो 30% डिपॉजिट नहीं पे कर पा रहा हूँ. इसकी कंडक्ट खराब है. कंडक्ट मेरी गलती है. आई एम नॉट fulfilling the promise. In fact, I am the one who is committing the breach. So therefore, if the conduct of the party is such where he himself is at wrong, then in that case, he should be dissented. He should not be getting that relief of injunction. And lastly, injunction should not be granted in cases where the person is not having personal interest in the matter. Injunction is a remedy in personam. Injunction is not a remedy in rem. Injunction जो होता है वो मैंने I file a case, I seek injunction. तो जब तक मेरा उसमें सब्जेक्ट मैटर में इंटरेस्ट नहीं होगा, मेरा उससे लेना देने है सब्जेक्ट मैटर से, ऐसे ही मैं केस फाइल कर दूं, बोल देता हूं कि हाँ यहाँ पे ऐसा ऐसा घटना हो रही है, यहाँ पे ऐसा हो रहा है, ये ऐसा कर रहा है, उसके खिलाफ जो है इंजंक्शन दे दो, नहीं होगा. वो पीआईएल में होता है, बट दैट इज पब्लिक इंटरेस्ट. There I am the not one getting affected. There the whole the person in large, the people at large are getting affected. But here you are talking about the cases where it is a remedy in personam. Personal remedies है जहाँ पे मेरा कुछ लेना देना ही नहीं है और फिर मैं इंजंक्शन करता हूँ. तो ऐसे केसेस में जो होता है इंजंक्शन ग्रांट नहीं होता. So these are the 10 instances in which injunction cannot be granted. So if anybody is filing a suit and seeking any of these 10 remedies, then in those cases injunction will not be granted. So we halt here for the time being, and then we'll continue with the next chapter with respect to cancellation of an instrument and rescission of an instrument, whether it's under the specific relief act.